गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है न्यू इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 जो है यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो बजट सेशन में लेके आने वाले हैं। तो ये बिल जो है इंडिया के जो इमिग्रेशन लॉज हैं उनको स्ट्रीमलाइन करेगा और मॉडर्न सिक्योरिटी नीड्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ उनको अलाइन कर देगा। ठीक है। तो ये बिल में स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ लाई जा रही हैं, क्लियर रेगुलेशंस लाई जा रही हैं एजुकेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की, और एक डिफाइंड फ्रेमवर्क लाया जा रहा है फॉरेनर्स के रजिस्ट्रेशन का, वीज़ा इशुएंस का और डिपोर्टेशन प्रोसीजर्स का। बिल में हेफ्टी फाइन्स का प्रोविज़न है, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट मैकेनिज़म्स हैं अगर वायलेशन होती है इमिग्रेशन लॉज की, और इलीगल इमिग्रेशन को और डॉक्यूमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए पेनल्टीज़ भी दी गई हैं। बिल में डिफ़ाइन किया गया है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यूनिवर्सिटीज़ की, हॉस्पिटल्स की, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की जो कि फ़ॉरेन नेशनल्स को एडमिट करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना होगा और रिपोर्ट करना पड़ेगा अथॉरिटीज़ को। हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो कि फ़ॉरेन नेशनल्स को एडमिट कर रहे हैं उनकी कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस होंगी कि वो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, और इससे के थ्रू जो है हम बेटर ट्रैकिंग कर सकेंगे फॉरेनर्स की इंडिया में, और मिस यूज़ ऑफ वीज़ा को भी हम रोक सकेंगे। ये बिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्रेटर कंट्रोल दे देगा वीज़ा रेगुलेशंस के ऊपर, पासपोर्ट रिक्वायरमेंट्स पर, फॉरेनर्स के रजिस्ट्रेशन पर, और बॉर्डर सिक्योरिटी को भी जो है इसमें इम्प्रूव करने के प्रोविजंस हैं। तो इस लॉ के अंडर इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास पावर होगी, ग्रेटर अथॉरिटी होगी डिटेन करने की, इन्वेस्टिगेट करने की, डिपोर्ट करने की इलीगल इमिग्रेंट्स को, पावर होगी उनके पास कंट्रोल करने के लिए मूवमेंट्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फॉरेनर्स को, राइट टू डिनाई एंट्री होगी उनके पास बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रिस्क्स, और इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, और इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम भी जो है वो स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो इस बिल में प्रोविजंस हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स जैसे कि आपकी एयरलाइंस होती हैं, जो शिपिंग कंपनीज होती हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होंगी जो अनऑथराइज्ड अगर फॉरेनर्स को वो लेकर आ रही हैं इंडिया में, तो फिर उनके ऊपर उसके बेसिस पर ही लीगल पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी। तो बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल नॉर्म्स को जो है हम इसके थ्रू कर पाएंगे और इलीगल एंट्री जो है इंडिया में रोक पाएंगे। तो एग्जिस्टिंग लॉज जो इमिग्रेशन पर हैं वो आउटडेटेड हैं, वॉर टाइम कंडीशंस में जो है बनाए गए थे वो। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो चुकी है, इवॉल्विंग सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं और इंक्रीजिंग ग्लोबल माइग्रेशन के तहत गवर्नमेंट को का मानना है कि एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की ज़रूरत है ताकि मैनेज किया जा सके इमिग्रेशन को। अब जो स्ट्रिक्ट डिपोर्टेशन पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं उससे लॉन्ग टर्म फॉरेन रेजिडेंट्स और असाइलम सीकर्स पर इफेक्ट होएगा, और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का ये भी कहना है कि ड्यू प्रोसेस और जो है वो फॉलो नहीं किया जाएगा, और डिपोर्टेड इंडिविजुअल्स के ट्रीटमेंट पर भी जो है कुछ कंसर्न्स हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स जो है उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स से कंप्लाई करने में, और कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी आ सकती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और मेडिकल टूरिस्ट को इंडिया में एडमिट करने में। ठीक है। तो गवर्नमेंट को इस मामले में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी कि कैसे इन्फोर्समेंट की जा रही है, और हरासमेंट जो है वो रॉन्गफुल डिटेंशंस ना की जाएं। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट जो है 2021 का एक प्लान रिवाइव कर रही है जिसमें कि जीडीपी को एक न्यू मैट्रिक जिसका नाम होगा ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट उसके साथ सप्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि जो इम्पैक्ट है नॉलेज का वो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ पर मेजर किया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक सेशन भी कंडक्ट किया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को डिस्कस करने के लिए। तो GDKP ये सप्लीमेंट करेगा हमारे जीडीपी को, कैप्चर करेगा नॉलेज ड्रिवन सेक्टर्स, इंटेलेक्चुअल असेट्स और इनोवेशन को टू द इकोनॉमी। अनलाइक जीडीपी, जीडीकेपी जो है वो असेस करेगा इम्पैक्ट ऑफ नॉलेज ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज़ किया कि जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं, तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो फुली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल, रिसर्च और इनोवेशन इंडिया में कितनी जनरेट हो रही है। इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिसर्च, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, डिजिटल सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन जीडीपी जो है वो इन्हें फुली जो है वो मेजर नहीं कर पाता है। जीडीपी तो सिर्फ टेंजिबल गुड्स और सर्विसेज पर फोकस करता है, तो इसलिए एक हॉलिस्टिक मैट्रिक की ज़रूरत है। ठीक है। जो कि इनटेंजिबल असेट्स, डिजिटल इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल कैपिटल को भी मेजर कर सके। तो वेल डिफाइंड जीडीकेपी जो है वो
गवर्नमेंट को हेल्प करेगा कि वो बेटर पॉलिसीज़ बना सके उन सेक्टर्स के लिए, जैसे कि एजुकेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो करंटली जो है हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड तो किए जाते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, जीडीपी कैलकुलेट करते हुए, लेकिन वो एक तरह से उसको इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो डिस्कशंस अभी अंडर वे हैं कि एक कैसे सैटेलाइट अकाउंट बनाया जाए ताकि नॉलेज बेस ऑफ इकोनॉमी को हम मेजर कर सकें। एक टेक्निकल कमेटी भी फॉर्म की जाएगी जो इवैल्यूएट करेगी उस प्रपोजल को, ठीक है। 2021 में नीति आयोग ने ये प्रपोजल दिया था कि जीडी की केपी होना चाहिए, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखते हुए नीति आयोग ने ही जो है इस प्रोजेक्ट को शेल्व ऑफ कर दिया था अगस्त 2021 में। चैलेंजेस क्या हैं? जीडीपी तो जो है उसके लिए जो है हमको वेल एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन जीडीकेपी के लिए हमें न्यू मेथडोलॉजीज़ बनानी पड़ेंगी उसको मेजर करने के लिए। डेटा जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर, रिसर्च आउटपुट, डिजिटल इनोवेशन, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, जो भी डेटा है वो फ्रेगमेंटेड है, डिफ़िकल्ट टू क्वांटिफाई है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने भी कहा है कि डिफ़ाइन करना और क्वांटिफाई करना नॉलेज पैरामीटर्स को बहुत ही सब्जेक्टिव होगा और उसके लिए एक्सटेंसिव रिफाइनमेंट चाहिए होगी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डेवोल्यूशन इंडेक्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज़ करने वाली है, जो कि एक रिजल्ट है मेटिकुलस रिसर्च और एम्पेरिकल एनालिसिस की 6 क्रिटिकल डायमेंशंस के ऊपर: फ्रेमवर्क, फंक्शंस, फाइनेंसेस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी बिल्डिंग और अकाउंटेबिलिटी ऑफ पंचायत्स। तो ये एग्जामिन करेगा इंडेक्स कि कितनी ज़्यादा फ्री हैं पंचायत अपने जो है इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने में। तो एक तरह से टूल की तरह सर्व करे एक टूल की तरह सर्व करेगा ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने में और लोकल सेल्फ गवर्नेंस को जो है वो एनहांस करने में। सिटीजन्स को हेल्प करेगा कि उनको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी ट्रैक करने में उनकी पंचायत की फंक्शनिंग को। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको डेटा ड्रिवन इंसाइट्स मिलेंगे एडवोकेसी और रिफॉर्म के लिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको एक रोड मैप मिलेगा कि कैसे इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज़ किया जा सकता है। और पॉलिसी में जो मेकर्स हैं वो ओवरऑल हेल्थ ऑफ लोकल गवर्नेंस एंड आइडेंटिटी देख सकेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिवाइज किए हैं मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की गाइडलाइंस को। तो ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम स्टेट और यूटी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है प्रोक्योरमेंट करने के लिए पेरिशेबल या एग्रीकल्चरल या फिर हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज़ जैसे टमाटो, अनियन या पोटैटो, तो जिन पर एमएसपी नहीं मिलता है। तो ये तब की जाती है ये स्कीम इम्प्लीमेंट जब कम से कम 10% रिडक्शन हो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस में इन कमोडिटीज़ का, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो ये एक कंपोनेंट बना दिया गया है पीएम आशा स्कीम के अंदर। जो प्रोक्योरमेंट या कवरेज लिमिट है प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स की, उसको 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। स्टेट्स के पास ऑप्शन दिया गया है कि वो डिफरेंस अमाउंट पे कर सकती है मार्केट इंटरवेंशन प्राइस का और सेलिंग प्राइस का डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ फार्मर्स। जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी वो सेंट्रल नोडल एजेंसीज जो हैं वो नेफेड और एनसीसीएफ जो है वो स्टेट्स को रीइंबर्स कर देंगी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बैलेट है दिस ईयर यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम का वो ओपन होने वाला है। ये स्कीम जो है इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एमओयू जो कि 2021 में साइन किया गया था उसका पार्ट है। फॉर्मली इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2023 में। ये सिटीजन्स को अलाउ करती है स्कीम एक्चुअली 18 से 30 साल के इंडियन सिटीजन्स जिनकी उनको वो लिव कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं यूके में तीन अप टू 2 ईयर्स। और जो कैंडिडेट्स हैं वो यूके में कभी भी जा सकते हैं, वहाँ से वापस भी आ सकते हैं इस 2 साल के पीरियड के बीच में। तो एक इंडियन नेशनल जो है जिनकी 18 से 30 की एज है, उनके पास बैचलर्स डिग्री है और अबव है, और कम से कम उनके जो है 18 साल से कम एज के बच्चे नहीं हैं, उनको ये जो है वीज़ा मिल सकता है और बाकी कुछ कंडीशंस भी हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साफ्ता। ये टॉपिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो रेगुलेट करे इनफ्लो ऑफ एडिबल ऑयल्स जो कि नेपाल और बाकी की सार्क कंट्रीज से इंडिया में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें मिसयूज़ किया जा रहा है साफ्ता नॉर्म्स का। साफ्ता एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन मतलब सार्क कंट्रीज़ के बीच में, जो 2006 में इन्फोर्स हुआ था।
साफ्ता रिकॉग्नाइज करता है नीड फॉर स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट लो एंड डेवलप्ड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। तो ये साफ्ता के अंदर एलिमिनेट किए जाते हैं बैरियर्स टू ट्रेड, प्रमोट किए जाते हैं कंडीशंस फॉर फेयर कंपटीशन, और एक फ्रेमवर्क दिया जाता है रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। तो ये एक ट्रायनियल इवेंट होती है एशियन फिशरीज सोसाइटी जो कि कोलालमपुर बेस्ड है, और इसमें जो है ग्लोबल कोलैबोरेशन किया जाता है इस सेक्टर में। तो ये सेकंड टाइम इंडिया में होस्ट की जा रही है, इससे पहले 2007 में कोची में होस्ट की गई थी। इंडिया अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखा रहा है कि कैसे वाइबल फिश प्रोडक्शन सिस्टम्स हमने जो है वो बनाए हैं। इंडिया जो है वो ग्लोबली सेकंड नंबर पर है टोटल फिश प्रोडक्शन में, और ऑल्सो इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो ये 14th मीटिंग है इसमें की प्लेयर्स जो हैं वो आएंगे फिशरीज़ और एक्वाकल्चर सेक्टर्स के, और लगभग जो है 24 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वैंकोमाइसिन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम ने एक रिसेंटली स्टडी की है जिसमें पाया गया है कि वैंकोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है डायरिया को कंट्रोल करने के लिए, उसका यूज़ करते हुए एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ जो कि ऑटोम्यून लिवर डिसीज़ से रिलेटेड है उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो वैंकोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो सिवियर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे कि एमआरएसए को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जैसे कि डैमेज टू हेयरिंग एंड किडनीज, और ये कोल्ड फ्लू या बाकी के वायरल इन्फेक्शंस पर काम नहीं करती है। तो ये क्या करती है कि बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को में इंटरफेरेंस करती है, और उसकी वजह से जो है बैक्टीरियल सेल जो है वो वीक हो जाते हैं और डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। ये टॉपिक भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक डीप सी फिशिंग एक्सपेडिशन जो फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया, उससे कई हाईली प्रोडक्टिव फिशिंग ग्राउंड्स हमें अरेबियन सी में मिले हैं। तो फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के अंडर आता है, सर्वे और असेसमेंट करता है फिशरी रिसोर्सेज की इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में और एडजॉइनिंग एरियाज़ में। मुंबई बेस्ड है ये। इसको 1946 में एस्टैब्लिश किया गया था। स्टेटस ऑफ अ सर्वे इंस्टीट्यूट मिला इसे 1974 में, और इसको एज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी रिकॉग्नाइज किया गया 1988 में, ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is New Immigration and Foreigners Bill 2025. This topic is important for your governance section. So Immigration and Foreigners Bill 2025 is likely to be introduced by Union Home Minister in the ongoing budget session of Parliament. This bill aims to streamline immigration laws and also bring them into line with the modern security needs and regulatory requirements. So it will replace the outdated laws like the Passport Act, Registration of Foreigners Act, Immigration Act of 2000. So this bill will introduce strict penalties, clear regulations for educational and medical institutions, and a more defined framework for foreigners registration, visa issuance, and deportation procedures. So this bill is bringing hefty fines and stricter enforcement mechanisms for violations of immigration laws. The aim is to deter illegal immigration and document fraud. So this bill has defined clear roles and responsibilities of the universities, hospitals, and medical institutions which admit foreign nationals. So these hospitals and educational institutions, they have to register foreign students and report them to authorities because they will have the legal obligations to maintain records now. So this provision will ensure better tracking of foreigners in India and prevent misuse of visas. This bill is giving more power to central government with respect to visa regulations, passport requirements, and foreigners registration. This bill is intended to tighten border security and improve the health, improve the monitoring of foreigners. Under the new law, immigration officers will have more power or greater authority to detain, investigate, and deport illegal immigrants. They will have the power to control movements of unrestricted foreigners as well. They will also have the right to deny entry based on security risks. Okay, this will enhance or strengthen India's border security and internal monitoring system as well.
Okay, this bill will have provisions holding transport operators responsible for carrying unauthorized foreigners into India. So, which are these transport operators? These are the airlines, shipping companies, transport agencies. They will have to verify passenger documents before boarding. So, they will otherwise face legal penalties, which will ensure better enforcement of international travel norms, and it will prevent illegal entry into India as well. Okay, so what is the need of this law? In the existing laws on immigration, they have become outdated. They were framed during wartime conditions of a Second World War. Now, due to technological advancements, evolving security threats, and increasing global migration, the government is believing that a single comprehensive law is required to effectively manage immigration. But there are concerns as well. So the law this the human rights groups are saying that this law could lead to stricter deportation policies affecting long-term foreign residents and asylum seekers. Human rights activists are also raising concerns about due process and treatment of deported individuals. Educational institutions and hospitals are saying that they will find it difficult to comply with the new reporting requirements, and this there may be concerns regarding bureaucratic hurdles in admitting international students and medical tourists. So therefore, government must ensure transparency in enforcement of these provisions to prevent harassment or wrongful detentions. So the next topic is gross domestic knowledge product. This topic is important for your economy section. So government is reviving its 2021 plan to supplement GDP with a new metric called the gross domestic knowledge product, which will measure the impact of knowledge on economic and social life. So Ministry of Statistics and Program Implementation has held a session to discuss this conceptual framework. So, what will be the GDKP? So, this is a proposed metric to supplement GDP and will capture the contribution of knowledge driven sectors like intellectual assets and innovation to the economy. And GDKP will assess the impact of knowledge on economic and social development. So, what is the need of GDKP in India? So, in the era of rapid technological advancements and digital transformation, traditional economic indicators are not fully reflecting the value generated by India's intellectual capital, research, and innovation. India is experiencing growth in research, patent, software development, AI, digital services, and intellectual property, but they are not fully accounted by GDP measurements because GDP is focusing on tangible goods and services only. So a whole or a more holistic metric is required to understand how knowledge impacts economic and social well-being in India. So many advanced economies are already working on alternative indicators which measure the intangible assets, digital innovation, and intellectual capital. So, a well defined GDKP could help the government formulate better policies for sectors like the education, research, technology, and entrepreneurship. Okay, so currently, the intellectual property products are recorded under the GFCF framework in the GDP dataset, but discussions are underway to explore the feasibility of a satellite account to measure the knowledge base of the economy. So, for that, a technical committee will be formed to evaluate and guide the proposal. So this is not a new proposal. Niti Aayog had already proposed this in 2021, but due to several complexities, after a review by Niti Aayog in 2021 itself, the project was shelved. So what are the challenges? So GDKP would require new methodologies to measure knowledge output, data on intellectual property, research output, digital innovation, and human capital development is already fragmented and difficult to quantify. So for that, National Statistical Commission is uh, finding is National Statistical Commission will be tasked in defining and quantifying the knowledge parameters, which otherwise is which are otherwise very subjective. So the next topic is devolution index. This topic is important for our governance section. So Ministry of Panchayati Raj will be releasing the comprehensive devolution index report uh, in Delhi today. So what is devolution index? It's a result of meticulous research and empirical analysis, providing insights into the progress of decentralization across states and UTs. So this index has been evaluating the six critical dimensions in the functioning of panchayats, that is framework, functions,
finances, functionaries, capacity building, and accountability of the panchayats. So this index specifically examines how free panchayats are to make and implement independent decisions. So it serves as a tool for strengthening cooperative federalism and local governance, also self-governance also. So how this will help? For citizens, it will provide transparency in tracking panchayat functioning and resource allocation. For elected representatives, it would offer data driven insights for advocacy and reform. For government officials, it would serve as a roadmap for implementing effective decentralization policies. And for policymakers, this will help in assessing the overall health of local governance and identify where reforms are most urgently needed. Okay. So the next topic is market intervention scheme. This topic is important for your economy section. So recently, central government has revised the market intervention scheme guidelines. So this scheme is being implemented on the request of state or UT governments for procurement of various perishable agriculture and horticulture commodities like tomato, onion, and potato. So it is implemented only when there is a minimum reduction of 10% in the prevailing market price as compared to the previous normal year. So MIS has been made a component of the integrated scheme of PM Asha now. Procurement or coverage limit of the production quantity of crops has been increased from the existing 20% to 25% now. States have also been given the option to pay the difference amount between the market intervention price and the selling price directly to the farmers. The operational cost will be incurred by the central government, and this will be reimbursed to the states, okay, in the interest of the farmers. So the next topic is UK India Young Professional Scheme. This topic is important for your international relations. So the ballot for the this year's UK India Young Professional Schemes will open next week. It was conceived as part of UK India Migration and Mobility MOU, which was signed in May 2021. It was formally launched in February 2023. It allows Indian citizens between 18 and 30 years to live and work in the UK for up to 2 years. It will enable candidates to enter the UK at any time while their visa is valid and leave and return anytime during their stay. So, to be eligible to get visa under this initiative, one has to be an Indian national aged between 18 and 30 years. One must have a bachelor's degree or above. One must have 2500 plus pounds in savings, and one must not have any children under the age of 18 who live with you or whom you are financially supporting. Okay. So apart from that, there are other eligibility criteria to apply under the scheme. So the next topic is SAFTA. This topic is important for your international relations. So recently, the Solvent Extractors Association of India has requested the government of India to regulate the inflow of edible oils from Nepal and other SAARC countries due to misuse of SAFTA norms. So SAFTA is a free trade agreement of the SAARC countries, and it came into force in 2006. So SAFTA signatory countries include SAARC countries, of course, and SAFTA recognizes the need for special and differential treatment for LDCs in its preamble. The objective of this agreement is to eliminate trade barriers, promote conditions of fair competition, and also establish a framework for further regional cooperation. Okay. So the next topic is Asian Fisheries and Aquaculture Forum. This topic is important for your economy section. So 14th Asian Fisheries and Aquaculture Forum is being organized in New Delhi, which will be a which is a triennial event of the Asian Fisheries Society, which has a strong legacy of fostering global collaboration in the sector. It is being hosted in India for the second time after uh, it was hosted by India in Kochi in 2007. So this platform will provide this forum will provide a platform for India to showcase its contributions in viable fish production systems. We all know that India occupies second position in the total fish production and also aquaculture production globally. So this Asian Fisheries Society is based in Kuala Lumpur, Malaysia, and this 14th forum will bring together key players from 24 countries from the fisheries and aquaculture sectors. Okay. So the next topic is vancomycin. This topic is important for your science and tech section. So a study led by the University of Birmingham has found that vancomycin, which is a commonly used antibiotic for diarrhea, it can be used to treat a type of inflammatory bowel disease, which is linked to autoimmune liver disease. So vancomycin is an antibiotic
which is used to treat severe bacterial infections like MRSA. It is commonly used to treat infections in the bloodstream also. It may cause some serious side effects, and this antibiotic does not work in cold, flu, or other viral infections. So this antibiotic works by interfering with the bacterial cell wall synthesis, and as a result, the bacterial cell becomes weak and more susceptible to damage, leading to its death. Okay. So the next topic is Fishery Survey of India. This topic is important for your economy section. So a deep sea fishing expedition led by the Fishery Survey of India has revealed several highly productive fishing grounds in the Arabian Sea. So Fishery Survey of India is part of the Ministry of Fisheries, and it is responsible for the survey and assessment of fishery resources in the Indian exclusive economic zone and its adjoining areas. So it is headquartered in Mumbai. It was established in 1946. It was given a status of a survey institute in 1974, and it was recognized as a science and technology institute in the year 1988. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.